Well, Sanju, thanks so much for your time. First of all, how's the side feeling? Hope everything is not too bad. Yeah, it feels all right. I was just not ready to come back and bat here. So I think, yeah, it looks all right. I think just maybe observe it tomorrow and see how it is. What did you make of that match, first and foremost, of the 188 that you had to chase, and your bowling performance? Yeah, I think we bowled really well. I think definitely there were phases where they came hard at us, and that's very natural in this league. But I would like to give the credit to all our bowlers and fielders. I think the energy inside the ground was really fantastic. And I felt that that score was definitely chaseable. The batting lineup which we had, the start which we had in the power play, I felt it was definitely chaseable score. But I think as we all saw some fantastic bowling by Starc at the last over of the innings, I think that's qualities from the international, one of the best guys around in the world. So I think I would like to give it to Starc. I think he won the game for them in the 20th over. Okay, when we went to the super over, you probably knew what you were going to get from Mitchell Starc. What was the plan? What was the plan sending the two guys out for the super over? Yeah, plan was to swing hard. I think nothing else actually. Swing hard as possible. You know he's going to come hard at you. I think you just have to go hard at him back actually, yeah. And Sandeep did such a great job for you throughout the match proper. It's a tough ask bowling that super over because you're just the lone man, aren't you? Absolutely, I think he has been bowling the toughest overs for me from last 3 to 4 years. I give him the 4th and the 6th in the power play and the 18th and the 20th in the slog. So he has been bowling some really tough overs, but I'm very fortunate to have someone like Sandeep Sharma with me, and definitely the way Jofra backed him, the way everyone bowled really well today. I think the team really looked properly, but I think just Starc took it away. I think we just created some momentum today. I thought a win today would have created some positivity in the dressing room, but I think it was not supposed to be. I'll feel for you today. Hope that injury recovers quickly. And thanks so much for your time as always, Sanju. Thank you so much. Thank you. Akshar, it's time to have a chat with you. The ebbs and flows of the game. The skipper of Delhi Capitals. अभी तो मुस्कुरा रहे हो बापू, पर एक वक्त ऐसा लग रहा था कि मैं क्या बोलूं अक्षर को अगर मैं मिलूंगा तो कमाल का मैच हुआ और हाँ अंत भला तो सब भला, अंत भला तो सब भला। पर क्या कहते हैं आगाज़ के बारे में क्या कहेंगे? आई थिंक मुझे लग रहा है कि जिस तरह का स्टार्ट मिला था उसके बाद जो पावर प्ले गया वहाँ मुझे लग रहा था थोड़ा और हम जोर से खेल सकते या ज़्यादा तेज़ी से खेल सकते थे, बट जब विकेट हमने बात की, हमने स्ट्रेटेजिक टाइम आउट लिया, तब केएल और बैट्समैन से बात हो रही थी, उन्होंने बोला कि विकेट इतना इजी नहीं है आके रन करना, तो मैंने तभी बात यही चल रही थी कि इंटेंट रखो। और उसके बाद जो आई थिंक 12 और 13th ओवर से जो हमें मोमेंटम मिला और जो फिनिश हुआ वो बहुत ही अच्छा हुआ। सो या अच्छा स्कोर बोर्ड पे लग गया था, सो अच्छा हुआ। तो आप खुश थे बेसिकली हाफ स्टेज पे जितने रन लग गए? जिस तरह का विकेट बिहेव कर रहा था और मुझे लगा बॉल फंस रहा था, तो इतना इजी नहीं था कि नया बैट्समैन को आके जो सेट है उसके लिए इजी लग रहा था, लेकिन जो नया बैट्समैन है वो आके इतने जल्दी से रन नहीं बना सकता था, तो और वही हुआ, जो नया बैट्समैन आ रहा था वो आके बड़े शॉट नहीं लगा पा रहा था। पर उनका शुरुआत बहुत अच्छा हुआ क्योंकि आपके जो मेन बॉलर्स थे मिच स्टार्क को 24, फिर मुकेश को 24, उस टाइम पे अक्षर के दिमाग में क्या जा रहा था? उस टाइम पे ऑब्वियसली जब रन पड़ते तो थोड़ा आप पैनिक बटन दबता है, लेकिन मैंने तब यही बोला कि अपने आप को कि 6 ओवर के बाद जब हमने इसलिए मैंने स्ट्रेटेजिक टाइम आउट भी लिया था, और मैंने तभी यही बोला था कि कि गेम अभी स्टार्ट होगा, बीच ओवर में इतना इजी नहीं है छक्के और चौके मारने के लिए, हमें बिलीव रखना पड़ेगा एज अ टीम और अपने को अच्छे बॉल पर डालना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि विकेट में कुछ है तो हम आएंगे और कुछ ना कुछ हो जाएगा, अपने को करना पड़ेगा। सो या वही चैट हुई और आप रिजल्ट देख सकते हो। और आपने देखा कि टीम जिसने पहले बैटिंग की ऐसा लग रहा था कि वापस वही जीत गई मैं मजाक कर रहा हूँ। अब जो लास्ट मैच में हुआ, आप एक वक्त पे कोस्ट कर रहे थे, बिल्कुल क्रूज 6th गियर पे चल रहा था और सडनली मैच हार गए, और वही इनके साथ भी हुआ, राजस्थान के साथ भी आज वही हुआ। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि कि जब सेट बैट्समैन आउट हो जाते हैं तो नए बैट्समैन को आके 1-2 विकेट गिरती है तो वो आके पैनिक बटन दबी जाता है प्रेशर में कि यार मुझे रन मारना है या सिंगल डबल है, क्योंकि सिंगल डबल भी इतना ईजी नहीं है क्योंकि बॉल थोड़ा फंस के आ रहा था, स्लो विकेट था। सो या उनके साथ भी यही हुआ। आपने आपकी खुद की बात करें तो आप हमेशा एक कंट्रीब्यूट करते हैं हर टीम में, जिस भी टीम में देखा है, तो जब अपने बारे में कभी सोचते हैं, क्योंकि बतौर कप्तान आपको बाकी लोगों के बारे में सोचना है, क्या सोचते हैं इस सीज़न के बारे में अक्षर पटेल? इस सीज़न जिस तरह का जा रहा था कि मेरे जब चैंपियंस ट्रॉफी खेल रहा था तब कट लग गया था, उसके बाद में जिस तरह की बॉलिंग चाहिए थी वो कर नहीं पा रहा था। सो ऑब्वियसली जब टीम जीतती है तो कॉन्फिडेंस मिलता भी है, बट
एज अ कप्तान और एज अ प्लेयर आप भी सोचते हो कि मैं इस टीम का कप्तान हूँ, मुझे कंट्रीब्यूट करना है टीम को, अगर मैं एग्जांपल सेट नहीं करूँगा तो टीम के लिए कैसा होगा। सो ये सब मेरे माइंड में चल रहा था। और बट कि मैं जब भी आता था मैं इम्पैक्ट डालने की कोशिश कर रहा था। मैं सोचता था कि मुझे जिस तरह का क्रिकेट खिलवाना है, जो टीम मेरी जिस तरह की क्रिकेट खेल रही है वो मैं आके पहले बॉल से स्टार्ट कर रहा था। और आज भी वही किया। मैंने सोचा कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अपनी प्रोसेस पे ध्यान दे सकता हूँ और रिजल्ट मिलेगा। तो आज मुझे लग रहा है कि वही मैं उसके ऊपर रहा और आज बॉलिंग भी अच्छी हुई, बैटिंग भी अच्छी हुई। सो या फिंगर भी थोड़ा फिंगर्स क्रॉस्ड। फाइनली 8 रन बाकी और जीतने के लिए, और मिच स्टार्क ने जो गेंदबाजी की उनसे तो हम बात करेंगे ही करेंगे, पर आपके दिमाग बतौर कप्तान क्या चल रहा था वहाँ से? ऑब्वियसली मैं यही सोच रहा था कि अगर मिचेल स्टार्क वो अगर एग्जीक्यूट कर देंगे तो मुझे लग रहा है कि वो अपने को गेम में ला सकते हैं। उस टाइम पे मुझे एक ही विकल्प दिख रहा था और वो मिचेल स्टार्क ही दिख रहा था। और जिस तरह के कि ऑब्वियसली 20th ओवर तो डाला, उसके बाद सुपर ओवर भी डाला, तो 12 बॉल में 12 यॉर्कर, उस जगह पे एक ही बॉल शायद मिस किया है, तभी वो ऑस्ट्रेलियन लेजेंड है मुझे लगता है। और मतलब जितनी भी तारीफ करी जाएगी, प्रेशर सिचुएशन में फील्डिंग को चेंज करने के बाद वो लगातार वो क्लियर रहना, थॉट प्रोसेस वो बताता है कि उनका माइंडसेट कैसा है। अक्षर रियली वेल डन। हो सकता था कि 6 में 6 जीत जाए, पर एक मैच हार गए, पर रियली वेल डन। नहीं, वो जरूरी है थोड़ा। थैंक यू। Akshar Patel, captain of the Delhi Capitals team. Finally, it's Player of the Match award time. May I request Mr. Gaurav Malhotra and Mr. Bhaskar Chandran to present Mitch Starc with this award. Not very often does one bowler get an award for just picking up one wicket, but his sensational final over and then the super over, just magical from the tall Australian fast bowler. Just the bowler Delhi Capitals needed. Mitch, outstanding bowling, mate. Firstly, would you ever have thought that I picked up 1 for 36 and I'm here as the player of the match? Would you have ever thought about that first? No. Now, but secondly, on a serious note, just talk us through that final over. Before the super over, what was going through your mind? Because we know how good you are in the end, but just to nail 6 out of 6, we saw Trent Boult doing the other day, and you've done it today. Yeah, I mean, two older cricketers there, I guess. No, it's just sort of backy execution. You run in with a clear plan and execute as best as you can, and it doesn't come off, then at least you've executed, and sometimes it does come off. So a bit of luck goes a long way, but yeah, it was a fantastic game, and we're on the right end of it. I think we're going to run through the package, especially of you bowling those 6 balls. Was there any time during the course of that over you felt maybe I needed to do something different? Because up there, Simon Doull was saying, oh, everybody knows he's going to bowl a Yorker. Let him bowl a bouncer with that kind of speed in your hands. I've played long enough that everyone pretty much knows what I'm going to do. If I can execute more often than not, it's going to be okay. So, yeah, I mean, you could play that over 10 more times and do 10 different things, and it might be 10 different results. So, as I said, a bit of luck goes a long way, and fortunately I executed well enough to get us to a super over, and then, yeah, we were on the right end of it. And talk us through the super over as well. What happened during the course of that with the different right, left-handers, and what you were thinking, especially when Riyan Parag came into bat? Yeah, I was probably a little surprised they had left-handers with the ball tailing in and my angle. So probably got 2 wrong there, and obviously stepped on the wide line a bit. So yeah, I mean, I got away with a couple there, but we obviously have the batting depth to chase the runs. So yeah, a solid win in the end. And how's the energy around the group been? Because as I said, coming into a new team, sometimes you are trying to get used to it, but I suppose just the way I see all of you around one another seems like it's just been very magnetic, just the feelings around each other. Yeah, it has. It's a good mix of youth and experience. Obviously, we've got Aksar's leading the team really nicely. We've got Faf and Kale and Tristan, who've been around long enough to help there. Obviously, Kuldeep's been fantastic, and then we've got a lot of talent in the group as well. So we're having a lot of fun. Obviously, success helps that, and tonight will certainly help the momentum. But yeah, it's been a great group to be a part of so far, and hopefully a lot more success. Thanks for the entertainment. Thanks for the chat. Really well done. Cheers, thanks. Mitch Starc, our player of the match, and what a game we have had here at the national capital. Outstanding.